अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन टिप्स के साथ मैं हूं खालिद नसीर, आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा आज का टॉपिक है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड रिन्यूअल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है और इसकी एक्सपायरी के बाद आपको इसका रिन्यू कराना लाजिम होता है, क्योंकि कनाडा ट्रैवल करने के लिए वैलिड परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की ज़रूरत होती है। हमारे बहुत से भाई और बहन जब इस कार्ड को रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स से वो वाकिफ़ नहीं होते। उनमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है, जिसके अंडर आपको ये प्रूव करना लाजिम होता है कि लास्ट 5 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज़ आप कनाडा में या फिज़िकल प्रेजेंट थे, या फिर आप किसी कैनेडियन कंपनी के लिए ओवरसीज़ काम कर रहे थे, और या फिर आप किसी कैनेडियन स्पाउस को अकम्पनी कर रहे थे। जब आप अपनी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको तमाम लिस्ट ऑफ एब्सेंसेस देनी होती हैं। हमारे बहुत से भाई कनाडा से बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में एक रेजिडेंस वीज़ा साथ रखते हैं, जैसे कि दुबई, कुवैत और सऊदी अरेबिया। उन भाई बहनों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। इन मुश्किलात में 730 डेज़ की रिक्वायरमेंट्स को मीट ना करना शामिल है, और इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस के दरमियान इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स सीख करता है जिसमें फॉर एग्जांपल नोटिस ऑफ असेसमेंट, बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स इंफॉर्मेशन और तमाम सपोर्टिंग एविडेंस शामिल होते हैं। हम अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड रिन्यूअल की एप्लीकेशन फिल करें तो इस प्रोसेस को किसी प्रोफेशनल के थ्रू हैंडल करें, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं, और अगर उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फिल ना किया जाए तो एप्लीकेशन में अननेसेसरी डिले हो सकती है या फिर रिफ्यूज़ल का भी अंदेशा होता है। तो इसके लिए आपको अगर मज़ीद मालूमात चाहिए या आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड की रिक्वायरमेंट्स के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे दोबारा कर लें। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप हमें ईमेल करें, हम अगले प्रोग्राम में इसका जवाब देंगे। ठीक है। अगर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड रिन्यूअल प्रोसेस के हवाले से या रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, या अगर आप नए इमिग्रेंट हैं और अपनी रेजिडेंसी को रिन्यूअल के हवाले से प्लान करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर मशवरा हासिल करें। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर रन हो रहा है, आप हमें ईमेल करें और हम आपके ईमेल्स का जवाब पूरी डिटेल से देंगे और आपके सारे कंसर्न्स को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। 1819 को दरियाए नियाग्रा को अमेरिका और कनाडा के दरमियान सरहद तस्लीम किया गया। आबशार का ज़्यादा हसी हिस्सा कनाडा की जानिब है, जिसके लिए रेनबो ब्रिज से बजरिया गाड़ी या पैदल कनाडा में दाखिल हुआ जा सकता है। आपकी ईमेल्स का शुक्रिया। आप अपनी राय से हमें आगाह करते रहा करें ताकि हम आपकी राय को सामने रखते हुए अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। मॉन्ट्रियल से आसिफ शराजी ने हमें ईमेल किया है जिसमें उन्होंने शिकवा किया है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल की बात करते हैं मगर इसके हल की बात नहीं करते। आरिफ शेख ने पिछले प्रोग्रामों में कहा था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। आज हम उनसे पूछते हैं कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में हमें कैसे जाना चाहिए, हम कैसे मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में एंटर हो सकते हैं। आइए पहुंचते हैं आरिफ शेख के पास। जी बदर साहब, शराजी साहब की इस ईमेल का तो पहले बहुत शुक्रिया, लेकिन इस ईमेल में पहला उन्होंने जो शिकवा किया मैं उसका जिक्र कर दूं। उन्होंने कहा कि आपने पहले प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि हम लोग यहाँ के मुकामी पॉलिटिकल सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं करते, और उन्होंने कहा कि आपने भी मसला तो बताया लेकिन बाकी लोगों की तरह आपने उसका हल नहीं बताया। शादी साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया।
حل بتانا چاہتے تھے ہم، بلکہ اب آج سے ہم آغاز کریں گے کہ ہم ان مسائل کی جن کی ہم نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے حل بھی آپ تک پہنچیں۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب کینیڈین پولیٹیکل سسٹم میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کو ذرا پیچھے چھوڑ دیں۔ یہاں پہ شارٹ کٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کئی یہاں پر مثالیں موجود ہیں کہ یہاں پر شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے جتنی تیزی کے ساتھ سسٹم میں آئے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سسٹم سے باہر نکل گئے۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ کو اپنے محلوں کی بیس پر، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے کونسلر کی بیس پر خود یا اپنے بچوں کو والنٹیئر بنائیے۔ آپ کے بچے ان کے ساتھ والنٹیئر ورک کریں، ان کے پاس جائیے، ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، مہینے میں 1-2 گھنٹے ان کے ساتھ کام کیجیے۔ اس سلسلے کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں۔ پھر اپنے مقامی ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ کے ساتھ کام کیجیے، اپنے مقامی ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کام کیجیے، کسی سیاسی جماعت کا ممبر بن جائیے۔ جو پسند ہے آپ کو اس کے منشور کو پڑھیے، دیکھیں آپ کو کیا پسند ہے، جس پارٹی کی زیادہ چیزیں آپ کے قریب ہیں اسے جوائن کر لیجیے۔ اپنے بچوں کو یوتھ ممبر بنائیے، خود اس کے پراپر ممبر بنیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس وقت زیادہ بہتر انداز میں معلوم چلتی ہیں جب آپ مقامی ممبرز کے ساتھ، مقامی نمائندوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ چیز سوچنا چھوڑ دیجئے کہ ہم جس ملک سے آئے ہیں وہاں کے پولیٹیکل نظام میں کسی پارلیمنٹ کے ممبر تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ پارلیمنٹ کے ممبر کے آفس میں جسٹ واک ان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا۔ دی اونلی تھنگ وی نیڈیڈ فرام یو از ٹائم۔ آپ کو نکلنا ہے، وقت دینا ہے اور ان کے ساتھ جا کے کام کرنا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہوگا کہ اگر آج میں اور آپ اپنے بچوں کو یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں شامل کر دیں اور ان کو اس طرف لے کر جائیں تو باخدا آنے والے دنوں میں میں یہ دیکھ سکتا ہوں اور آپ بھی یقیناً دیکھ پائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے جو ہوں گے وہ یہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اب ہم کینیڈین پولیٹیکل سسٹم میں کچھ کام کرنا شروع کر دیں جس کو اب ہم نے اپنا لیا ہے، جہاں پر اب میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم ان نعمتوں سے کیا کیا کام لے رہے ہیں اور اگلی زندگی میں ہمیں اس کا کیا جواب دینا ہے، یہ ہے آج کا موضوع، اور اس کا جواب حاصل کرتے ہیں اپنے اسکالر وقار اعظمی سے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Holy Quran says, ثُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, that we will be asked about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the gifts that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allah subhanahu wa ta'ala has given us so many gifts, uncountable blessings. Our eyes are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our ears are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our hands are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Our whole body is blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that we have is the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. But all these blessings will become a witness against us on the day of judgment. Our eyes will be witness against us. Our ears will become witness against us. Our hands will become witness against us. And we will be saying, لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, why is it that you are giving evidence against us on day of judgment? And they will say that it is because Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to do so. So everything we're doing that in this life, everything we're doing on this earth, Allah will command the earth to give witness against us. The Holy Quran says, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, that Allah subhanahu wa ta'ala will give the power to the earth to give witness against us, to give evidence against us. So if we look in our society, what we're doing, our eyes, what is it that we're watching? Our feet, where are they going? Our hands, what are they doing? We see in our society so many people committing so many crimes. We see people in our society who are involved in drugs, who are involved in all sorts of things, whether it's prostitution, whether it's crime and criminal life. These things are not just haram. I mean, this is something which absolutely Islam condemns, is forbidden, it is haram. But also know that on the day of judgment, everything that you're doing, that you cannot get away, that the earth, our hands, our mouth, our whole body will be giving witness against us, will be giving evidence against us. Are we really prepared for that? And Islam makes it haram, but also the law of the land makes it haram. So just because
you think that we live in a country which is non-Muslim, that you can actually abuse it, well, that is haram. This is your country. This is our country. This is the country that we have to respect the law of the land. And this is what Islam says, that as Muslims, we have to respect the law of the land of the country, that we cannot go about evading taxes. We cannot go about doing drugs or committing crime and being unfair to people and creating violence of any sort. This is something which Islam condemns, and Islam demands as Muslims to be good citizens, citizens who are loyal to the law of the land, citizens who are good to other people who are whatever faith they may belong to our neighbors. And this is the hadith of the Prophet, that if you're a person who sleeps with full stomach, but if your neighbor sleeps hungry, then you're not one of us, then you're not a Muslim. If you're a person by whose hands the neighbors are not safe from, then you're not from one of us, you're not a Muslim. These are the hadiths of the Prophet, and these are the teachings of the Prophet. And let us pray that may Allah give us the strength to live like a true Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें ईमेल कीजिएगा oc.badr@gmail.com. नियाग्रा फॉल्स से बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.